Assalamu alaikum everyone, my name is Faraz Najib and I am back with another video for the course of Instagram marketing. और इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम प्रॉपर कैप्शंस किस तरह से लिख सकते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए. वेल आई एग्री टू द फैक्ट कि इंस्टाग्राम इज़ मोर अबाउट द इमेजेस, लेकिन हमें इस तरह की कैप्शंस जो हैं वो चाहिए होती हैं जो अटेंशन ग्रैबिंग हों ताकि हमारा कंटेंट जो है वो ज़्यादा इंगेजिंग हो सके. तो अब देखते हैं कि हमें कैप्शंस के अंदर कैप्शंस लिखते हुए किन किन चीज़ों को जहन में रखना है. आई हैव कलेक्टेड अ फ्यू टिप्स जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. तो सबसे पहले द टिप नंबर 1 इज़ कि वी नीड टू नो आवर ऑडियंस. जिस तरह से मैंने अपनी कंटेंट प्लानिंग के अंदर जिक्र किया कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम फ़नल के किस हिस्से के लोगों को टारगेट कर रहे हैं ताकि हम उनके मुताबिक ऑडियंस के मुताबिक जो है वो कैप्शन लिखें. जब हम कैप्शन जो है वो बिल्कुल ऑडियंस को जहन में रखते हुए नहीं लिखते तो वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होती ऑडियंस से और ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती. तो जब भी आपने अपनी कैप्शन लिखनी है, कैप्शन लिखते हुए ये बात समझनी है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस जो है वो किस सोशियो इकनॉमिकल सर्कल से ताल्लुक़ रखती है, इस चीज़ को भी समझना है. और आपने ये भी देखना है कि जो आपके क्रिएटिव्स हैं, जो आपकी इमेज है या वीडियो है, उसकी जो आप कैप्शन लिख रहे हैं वो इमेज जो है वो टॉप ऑफ द फनल से, मिड ऑफ द फनल से या बॉटम से रिलेट करिए ताकि उसके मुताबिक आप कैप्शन लिखें. अगर टॉप में है तो कैप्शन में भी अवेयरनेस के हवाले से ही हमारा टेक्स्ट होगा. वी वोंट बी पुशी, वी वोंट बी हार्ड एंड वी वोंट बी सेलिंग एनीथिंग. जो टिप नंबर 2 है दैट विल बी कि वी नीड टू यूज़ अ हुक टू ग्रैब द अटेंशन. तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडेड बाय अ टोटल कैरेक्टर लिमिट ऑफ 2200 जिसके अंदर रहते रहते हमें अपनी कैप्शन लिखनी होती है. लेकिन सी मोर के बटन से पहले हमारे पास सिर्फ 120 कैरेक्टर्स की लिमिट है. मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सी मोर से पहले हम कोई ना कोई हुक यूज़ कर लें. अब हुक क्या होता है? हुक होता है कोई भी ऐसी लाइन जो कि यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करे, जो रीडर को इंट्रोड्यू करे कि वो आगे भी इस स्टोरी को पढ़े. अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, पीपल वोंट क्लिक ऑन सी मोर एंड दे वोंट एंगेज एंड दे वोंट रीड द होल कैप्शन एंड इट विल ऑल गो टू वेस्ट. हुक की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. एनीथिंग that grabs the reader's attention. It can either be a fact, it can be something that is shocking, something that is amazing, something that is vague, something that is not clear and reader thinks कि उसे मज़ीद पढ़ना पड़ेगा to know more about this. A very simple example is that in the first line you put great news. So now the people will be like, okay, what's the news? I need to know about it, and they'll continue reading. Or you can say, in the first line, you can put a fact like over 1 billion users. I mean, Instagram has over 1 billion users worldwide. So that is the kind of thing that can grab the user's attention and he will feel like, अगर उसे नहीं पता होगा पहले इस फैक्ट का तो he'll feel like यार मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत है to know more about it. The tip number 3 is that it's very important tip actually. That is that we need to keep it short and simple. I would recommend to use 5 graders English को बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अंग्रेज़ी के. बिल्कुल सिंपल रखें, अपनी ऑडियंस को समझें. रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इस तरह की रीडेबिलिटी होनी चाहिए कि एक दफ़ा पढ़ने से समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसे बार बार पढ़ना ना पड़े. और अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करके लिखें और ब्रीफ लिखें कि आजकल बहुत कम लोगों के पास टाइम होता है कि बैठ के लंबी लंबी कैप्शंस को या स्टोरीज़ को पढ़ें. इफ़ यू थिंक आपकी जो इमेज है दैट गोज़ विद द स्टोरी, जिसके साथ आप जस्टिस नहीं कर सकते शॉर्ट ब्रीफ कैप्शन लिख के, और इट हैज़ टू बी लॉन्गर देन दैट, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट प्रॉपर स्पेसेस और पैराग्राफिंग कर सकते हैं आप अपनी स्टोरी की, ताकि इट इज़ मोर रीडेबल एंड इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड रीड थॉरली. द टिप नंबर 4 इज़ यूज़ इमोजीज़. इंस्टाग्राम बड़ा लाइट मूड का प्लेटफॉर्म है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन
आजकल तो इवन फॉर द प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पीपल आर यूजिंग इमेजेस, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा रिलेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन यूज़ इमोटिकॉन्स एंड समटाइम्स द creatives are so strong कि instead of putting in any kind of words in captions, you can go with emojis, and that would be good. That would be as good copy than anything else. उसके अलावा आप लाइट मूड की emojis यूज़ कर सकते हैं. एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ, एज ए सेट कि ये एक लाइट मोड का प्लेटफॉर्म है. दैट डजेंट मीन दैट यू कैन मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और spelling mistakes in it. Always before hitting the post button, check for the grammatical mistakes, check for the spelling mistakes, and make sure that you are not making a blunder, because that makes the other people feel that this blog or this brand is not serious about what they're doing. They're not professional, which is what we don't want to do. In the end, I would say whatever you write, it should be engaging, and engaging is the highlight of the whole story. Engaging होना चाहिए आपके content को, whether it is the copy or the creative. It should be the scroll stopper. If people are scrolling through, they should stop and read whatever you're saying. They should be interested in whatever you're talking about, and they should take an action. You can do a lot of things. You can talk to people about doing certain things. You can tell them to double click the image if they agree, and double clicking puts a heart on there, and you can ask for their opinion and things like that, so people engage more. And we need to use proper hashtags. So next slide के अंदर हम देखते हैं कि how we can use the proper hashtags. Okay, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि why hashtags are important. The hashtags are important because they give you more exposure. They give more exposure to your post in the terms of being in the explore section, or in the terms of being in the search. तो अगर आपके users जो हैं, if they're searching for something that is included in your hashtags, so they can find you in the third or fourth result saying the post about this. And if they already interact with the post that have similar hashtag, they can find you in explore. अब हमें hashtags को किस तरह से properly choose करना है. What you can do is you can go to the search bar and put a certain keyword that you are planning to put in the hashtag, and see that how many posts are there, and probably go for the most popular one, I would say. Other than that, automatically hashtag produce करने के लिए you'll find hashtag generator tools as well. You can go there और अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उसमें से related hashtag रख सकते हैं, और जो hashtag related नहीं है उनको ignore कर सकते हैं. एंड पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा ब्रांडेड हैशटैग के लिए. ब्रांडेड हैशटैग इज़ समथिंग जो कि आपका ब्रांड खुद इंट्रोड्यूस करता है. जिस तरह जैज़ का है, सबको बता दो, या HPL PSL का है, HPL PSL. इस तरह से हर जो बड़े ब्रांड हैं उनके अपने हैशटैग्स होते हैं. तो व्हाट दे डू इज़ कि जितने भी यूज़र्स जनरेट करते हैं उनके related post, they put that hashtag, and that goes in that certain inventory. So that is one good thing that you can do with your brand. Promote your hashtag and things like that. So that would be it from the video of how we can write good captions for Instagram.